something called decomposition मरी जिवे भाई चाहे मैराइन इकोसिस्टम हो या फिर चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो the process of breakdown of dead organism matter topsoil is the major site for decomposition topsoil मने पड़ुची humus O वाला layer soil रो O वाला layer then A वाला layer E वाला layer B वाला layer C वाला layer R वाला layer मने पड़ुची is known as transitional zone between two distinct communities yes two distinct communities जदि better देखा गले distinct देखा गले that is good for ecotone correct that is good for ecotone हुई चलो functional unit of ecosystem functional units of ecosystem जोड़ा कि हमें गोटे पर गोटे पढ़िबा something called energy flow कि energy flow केमती हुए तमे बर्तन तमे जानला ना species कोन निचे कोन then habitat कोन then जदि adaptation हैला ताहाले better जदि adaptation न होई परला ताहाले extinction होंगी नहीं ये सब क्लियर ओके then there is something called energy ताले बर्तन होची functional unit of ecosystem गोटे ecosystem what is ecosystem ना community plus environment community interaction with environment that is ecosystem तो ए community जो interaction करूची environment सहित केमिति करूची सेटा को हमें पढिया को ecology and ए जो interaction ता हमें देखुचे कि ए interaction ता जो होउची सेटा केमिति होउची whether there is while doing the interaction is there any energy flow during different layers is there any productivity increases is there any decomposition happens or is there any nutrient cycle तो भाबो ए चारिटा टॉपिक रे ही तमरो पूरा इकोलॉजी सब कंप्लीट हो एनर्जी फ्लो ता पय तो पढिया पड़िबो सीक्वेंशियल प्रोसेस थ्रू व्हिच एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल फूड चेन वाला कांसेप्ट एनर्जी फ्लो कि भाई हरिण थिला हरिण को बाघ खाइ देला तो बाघ हरिण पाखरे 100 किलो जूल थिला तो बाघ जदी तीनटा हरिण खाइबो ता पाखु 300 किलो जूल पळे आइला होंगी नहीं ट्रू yes then productivity कहार केते अधिक productivity is related to the role of biomass production केते तमरो प्रोडक्शन करछ तो जनरली इट इज रिलेटेड टू द प्रोड्यूसर्स को इकोसिस्टम रे केते अधिक प्रोडक्टिविटी हबो वेदर इट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे अधिक प्रोडक्शन हबो ना मैराइन इकोसिस्टम रे अधिक प्रोडक्शन हबो इट्स ऑल अबाउट प्रोडक्टिविटी कहा पाखरे हाथी जदी आज इते मोटा हेची आज से कोन खाइची कहार प्रोडक्ट कोठू कोन खाउची बोली तार प्रोडक्टिविटी एते बढ़ी गला टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे जोथि में हाथी तुमको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम रे मिलुछ तिमी माछ तुमको मैराइन इकोसिस्टम रे मिलुछ ता माने सी भी तो बहुत किछि कंज्यूम करूची ट्रू yes तो productivity सेठी देखिया पड़ियो then there is something called decomposition मरी जिवे भाई चाहे मैराइन इकोसिस्टम हो या फिर चाहे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो the process of breakdown of dead organism matter topsoil is the major site for decomposition topsoil माने पड़ुची humus O वाला layer soil रो O वाला layer then A वाला layer E वाला layer B वाला layer C वाला layer R वाला layer माने पड़ुची the topsoil humus वाला कॉम्प्लेक्स and सेठी हबो कोन तमर decomposition सेठी हबो decomposition nutrient cycle it is the consumption and recycling of nutrients for this is utilization of various organism नाइट्रोजन साइकिल हे जाऊ कार्बन साइकिल हे जाऊ सल्फर साइकिल हे जाऊ ऑक्सीजन साइकिल हे जाऊ फास्फोरस साइकिल हे जाऊ मीथेन साइकिल हो मते पढेबार अछि तमको नाइट्रोजन साइकिल दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसी हमें ऑलरेडी देखिछे नाइट्रोजन साइकिल oxygen cycle carbon cycle phosphorus is not that sulfur is not that methane cycle ये चारिटा तो बहुत इंपोर्टेंट yes okay no worry now the classification of ecosystem तो ecosystem को मु जदी क्लासिफाई करिवि there are two types of ecosystem गोटा होची natural आ गोटा होची man made ecosystem कोन natural ecosystem आ गोटा होची कोन man made ecosystem तो what is natural ecosystem ना बाय डिफॉल्ट जोटा तुमको ऑलरेडी देखा होतो कि गोटे कम्युनिटी ऑलरेडी गोटे नेचुरली मेड एनवायरनमेंट सहित रिएक्ट करछि दैट इज नेचुरल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम गोटे पानी आनी कि गोटे रखि देला एक्वेरियम करेक्ट नो एक्वेरियम ता भीतर तमे कोन कर देला पानी रखि देला एबायोटिक कंपोनेंट होंगी नहीं वाटर रखि देला एबायोटिक ता भीतर बायोटिक वाला कंपोनेंट माछो छाड़ देला ए माछो बर्तन ए पानी सहित रिएक्ट करिवो ना करिवो इंटरैक्ट करिवो ना दैट इज एक्वेरियम वाला कांसेप्ट मैन मेड इकोसिस्टम रे बहुत बड़ा इकोसिस्टम दम बनै परिवनी एज लाइक नेचर करेक्ट गार्डन पक्षी आसीबो तमे गार्डन तैयार कर दलो पक्षी आसीबो एंड पक्षी इंटरैक्ट करिवो यस डैम्स पानी सफिशिएंट अमाउंट रखि दलो तमे तैयार कर दलो डैम्स तैयार कर दलो ना करेक्ट नो
गोटे बंध देकी गोटे डैम तैयारी करदेला पानी टाको कंप्लीटली रखिदेल आ भितर जो माछ फाछ थिबो सेमाने आसी काम करिवे देन क्रॉपलैंड वेजिटेशन वगैरह सेटा तमे तैयारी कलो दीज आर मैन मेड इकोसिस्टम व्हाट इज नेचुरल इकोसिस्टम terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem or marine ecosystem terrestrial ecosystem forest तमे तैयारी करछो जनरली एकुटिया तो ये बाय डिफॉल्ट आगुर अछि ग्रासलैंड इकोसिस्टम बड़ बड़ गछ सहित जदी इंटरेक्शन ला दैट इज फॉरेस्ट इकोसिस्टम ग्रासलैंड छोटो छोटो ग्रासलैंड छोटो छोटो गछ दैट इज ग्रासलैंड इकोसिस्टम डेजर्ट इकोसिस्टम बुझी होची ईस्टर्न मार्जिन कॉन्टिनेंटल वेस्टर्न मार्जिन यस टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हबो अरे भाई मॉनसून टाइप सावाना डेजर्ट वो कहू ना कुपेन क्लासिफिकेशन मने पका कुपेन दैट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर एंड वेजिटेशन होंगे नहीं Copen's classification is based on two things. One is temperature and vegetation. So based on the vegetation, forest, grassland, desert. Based on temperature, कोठी temperature अधिक होबो desert temperature बहुत गुड़ाई थिबो correct no? Yes. Then aquatic ecosystem or marine ecosystem. तमर फ्रेश वाटर ही पारे लेक वाला कॉन्सेप्ट रनिंग वाटर ही पारे रिवर वाला कॉन्सेप्ट मैराइन ही पारे ओशन वाला कॉन्सेप्ट या फिर मैनग्रोव वेटलैंड इकोसिस्टम जोठी जस्ट रिवर आसे कि कॉन्फ्रेंस बनौछि कहा सहित समुद्र सहित करेक्ट नो मैनग्रोव वगैरह रीजन यस ये सब हो नेचुरल इकोसिस्टम कार डाउट अछि दी प्रकार इकोसिस्टम नेचुरल और मैन मेड एनी डाउट okay now what is this biotic and organic so biotic and organic are not synonymous organic compounds whether derived directly or indirectly from the plant and animal are biomolecules with at least one hydrogen bond protein lipids carbohydrates these are nucleic acids at least gote hydrogen bond that is called organic yes but any minerals which derived compound are referred as inorganic compound because they usually don't have contain a hydrogen bond तो गोटे होची बायोटिक आ गोटे एबायोटिक रे एबायोटिक जो थिरे हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं थाए कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड न थाए बट जदी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड थिला दैट इज कॉल्ड बायोटिक इज दैट क्लियर ऑर्गेनिक आ इनऑर्गेनिक दी जण मिसी के गेले से ताको बायोटिक जदी ऑर्गेनिक जदी किछि भी अछि दैट इज बायोटिक ट्रू होंगी नहीं कौन सी लिविंग ऑर्गेनिज्म जदि तबे देखिबो सेतरे कार्बन हाइड्रोजन रो बॉन्ड थिबो जदि कार्बन हाइड्रोजन रो बॉन्ड अछि दैट इज व्हाट इ कॉल्ड ऑर्गेनिक एंड जदि ऑर्गेनिक अछि ताहले से बायोटिक रे भी आसीबो यस ओके देन बायोम कोन मते मन पका बायोम होजी जोथरे कि लार्ज नंबर ऑफ इकोसिस्टम को मो जदि गोटे जगह रे नै गली दैट इज इकोसिस्टम समेशन ऑफ इकोसिस्टम इज इक्वल टू बायोम so large geographical area or region characterized by a particular set of climate condition plant and animals for example biome pyramid जो तमे देखिबो this is tropical desert coniferous forest boreal forest tundra जदि मु पहाड़ रे नै जीवी मने पकाओ ए पहाड़ mountain vegetation तलटा ड्राई डेसिडियस या फिर वेट डेसिडियस जहाँ भी नियो देन धीरे धीरे ऊपर को जदि जीवो कोनिफेरस पूरा फाइनल रे तुंद्रा यस तो ए सबुर ये गोटे प्रकार इकोसिस्टम ये गोटे प्रकार इकोसिस्टम ये गोटे प्रकार इकोसिस्टम ये गोटे ओवरऑल जदि मु आपको नेबी कैन आई से दिस इज ए बायोम गोटे पहाड़ दिस इज ए बायोम तो जदि सिमिलरली मु जदि हॉरिजॉन्टली जदि जीवी मते डेजर्ट रु नै कि सावाना रु नै कि स्क्रबलैंड ट्रॉपिकल देन रेन फॉरेस्ट एमिति हॉरिजॉन्टल भी मते मिलिबो वेजिटेशन अनुसार करेक्ट नो यस जदि मु वर्टिकली गली ताहाले भी मते मिलिबो डिफरेंट लेयर रे डिफरेंट वेजिटेशन हॉरिजॉन्टली जदि लैटिट्यूड रे चेंज करी गली ताहाले भी मते 0 डिग्री रेन फॉरेस्ट जते ऊपर जीवी से तो हैरान हेबी करेक्ट नो ग्रासलैंड वाला कांसेप्ट मिल जिवो टेम्परेट जोन मिल जिवो देन पूरा ऊपर पळेले 90 डिग्री आडू को पळेले हॉरिजॉन्टली तुंद्रा वाला रीजन मिल जिवो किंतु जदि पहाड़ रे हाइट रे जीवी लॉन्गिट्यूड रे हाइट रे अल्टीट्यूड नॉट लॉन्गिट्यूड अल्टीट्यूड रे जदि मु जीवी ताहाले भी मते रेन फॉरेस्ट रु डेसिडियस देन डेसिडियस रु कोनिफेरस रु तुंद्रा सेटा भी मिलेबो सो ए सबुर इकोसिस्टम हो अलग अलग ये सब इकोसिस्टम को मु जदि जोडी की गोटिए कहिबी दैट इज कॉल्ड बायोम then what is this biosphere is nothing but the part of earth where life can exist represents highly integrated and interacting zone comparisoning to air water and land
This is it can be intraspecific or interspecific. ये दिनांक तो word clear थी वो होंगे नहीं intraspecific and interspecific. When the population they are interacting with each other within the population, that is intra. When the population they are interacting among two different population, that is interspecific. Approx 20 kilometer thick, most life occurs between 500 meter below the surface of the ocean and about 6 kilometer above the sea level. Generally, life maximum between 500 meter below the surface of the ocean. ता तळु को लाइट पहुंची भी करनो थियो बुझी पतो ना नहीं फोटिक एंड अफोटिक जोन पळे आसे फोटिक जोन लाइट पहुंची परुची लाइट न पहुंची परले देन एटी लाइफ केमती बंचिबो मु तुमको कोन कहली तुमको मिनिमम दरकार कोन लिथोस्फियर एटमॉस्फियर हाइड्रोस्फियर करेक्ट नो एंड दिस इज व्हाट वी कॉल बायोस्फियर जोठी की इंटरैक्ट हबो चाहे से लिथोस्फियर सहित हो चाहे से एटमॉस्फियर सहित हो चाहे से ओशन सहित हो हाइड्रोस्फियर सहित हो इंटरैक्ट हबो बुझी होजी ना नहीं biosphere kahar doubt achi yes then habitat places where an organism or community of organism live including all living and non living factors jodi se mane banchandi that is by habitat micro habitat condition of organism in that immediate vicinity of a plant or animal for example gote gacha achi gachar gote particular jaga re hi se mane rahujandi alaga jaga re rahu hi na this is what we call particular immediate vicinity, that is what we call micro habitat. Is that clear? Habitat generally for a broader perspective the population mane gote bada jaga rahile that is habitat. Then what is micro habitat? Na jodi se gote particular jaga re jagi rahile that is called micro habitat. Then there is something called niche. Mo already kahichi ki this is the unique role samastan nijor unique role of a species within an ecosystem including the physical and biological conditions it requires to survive and reproduce. So niche of an organism and its interaction is determined whether they can stand the ecological structure of the ecosystem. जोड़ा कि producer रा निजर role, consumer रा निजर role, decomposer रा तार निजर role. So habitat you can consider this is the physical space occupied by the organism. Niche is considered to be functional space occupied by an organism. बुझिएला? Yes. Okay. Functional role occupied by an organism and देखो से कौन कहूची niche is nothing but unique role of a species within an ecosystem including the physical and condition it to regularly survive and reproduce. Niche of an organism is an interaction and determined by where it stands in the ecological structure of the ecosystem. Producer, consumer, decomposer से माने basically जो habitat रे रहिबे से habitat रे तांकर role कोन function of a species present in the habitat. Yes, habitat is जो जगह से माने रहिबे physical environment जोटी से माने रहउचंदी and से जगह से माने जो काम करूचंदी ताको कहै निचे. Yes. Habitat is nothing but its address, correct? No, देखो तापरे मु तो और रे लिखि ना occupation of a species in its habitat. Habitat रे थिला बेले तार जो काम that is called its niche. बाहर जाई कि से जहा करू सेगुडा फरक मुनि मते किंतु हैबिटेट रे थिला बेले घर भितरे तमे जो काम करू सेटा होची तमर फंक्शनल रोल. गोटे मार फंक्शनल रोल घर भितरे कोन बापार फंक्शनल रोल घर भितरे कोन जेतले से घर भितरे ही अछन दैट इज द निश. इज दैट क्लियर? ओके बाहरटा तो टेम्पररी. सो से बताबी इकोलॉजिकल निश ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिलेट्स टू व्हाट इट इज रिलेटेड टू व्हाट इकोलॉजिकल निश कि से जेतले ता हैबिटेट रे अछि सेतिक बेले से कोन करूची सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आमे आगु आसीबा अमेंसलिज्म कमेंसलिज्म ये सब डिफरेंट रिलेशनशिप सेगुडा तार फंक्शन ही नु सेगुडा तार रोल भी नु बुझी होजे ना नहीं. इट्स अबाउट की रोल फंक्शंस से माने कोन काम करिवे जेतले से माने तांको हैबिटेट रे थिबे. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस इज मोस्ट सिवियर इन कंपटीशन फॉर फूड लाइट एंड स्पेस फूड पाई हो लाइट पाई हो या फिर स्पेस पाई हो इज मोर सिवियर इन व्हाट? मन पका कंपटीशन कथा म कहितली कंपटीशन सेतिकी बेले हबो जेतले तमे कोनोसी जिंस को शेयर करिवोनी. यस दैट मींस क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ग्रोइंग. दैट मींस क्लोज रिलेटेड मींस तांकर निशे सेम थिबो
फंक्शन तो सेम थिबो 20 टा मनीष आसी गोटे जगह रहले क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ग्रोइंग इन द सेम एरिया और निचे फॉर एग्जांपल गोटे बाघ आसला गोटे नॉर्मल आसला गोटे मनीष जे कि वेजिटेरियन दी जनकर काम अलग हो कि नहीं बाघर काम नॉन वेज आ यार काम वेज ये ना ता सहित किसी कंपटीशन करियो ना सी आ सहित किसी कंपटीशन करियो से आराम से रहि जे बाघ को आ बाघ तू तोर नॉन वेज जति देखियो हे गुडा खाइबो मनीष को आ मनीष तू जोडा वेज देखियो से गुडा खाइबो देन कहा भीतर किसी कंपटीशन नहीं से मैंने अडॉप्ट करनेबे सिंपल सो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज डिफरेंटली रिलेटेड स्पीसीज वाला कांसेप्ट नहीं से तो डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव होता है कंपटीशन काहे हो तो कंपटीशन केतले हबो ना जेतले क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थिबे एंड ग्रोइंग इन सेम रीजन सेम एरिया that means in the same habitat they are having same functional role or they have same habitat same niche closely related species that's what competition is so answer should be B yes काको डाउट लागो क्वेश्चन सी देखो जो क्वेश्चन को लेवल रो आछे unless until you are very clear कि what is competition you won't able to attend this question true yes नल तब कोन बुझो distance related species ठीक अछि distance related species गोटे बाघ अछि आ गोटे हरिण अछि टू आर डिफरेंट ग्रोइंग इन द सेम हैबिटेट दी जण सेम हैबिटेट रो दौड़ा दौड़ी होतबे ताले कंपटीशन हो दैट इज नॉट रिलेटेड टू द कंपटीशन गेम इज रिलेटेड टू शेयरिंग द सेम स्पेस हैविंग सेम फंक्शनल रोल मींस सेम हैबिटेट सेम निचे कंपटीशन बुझियो छी ना नहीं सेम हैबिटेट एंड सेम निचे दीज आर द टू की प्रिंसिपल सेम हैबिटेट सेम निचे सेम जगह अरे सेम रोल जदी सेटा शेयर हे पाइलानी सेम रोल शेयर केमति हो भाई तू जो जिनसटा करियो मु भी से जिनसटा करियो मु शेयर करियो ही नहीं देन कंपटीशन यस the variability among living organisms from all sources including terrestrial marine and other ecosystem and the ecological complex of which they are part within which includes diversity within species between species and ecosystem is related to geographical zoological ecological diversity biological diversity तो से कोन कहछि the variability भल से देखो सी सबू तमे पढ़ी परिबनी किंतु तुमको एठी माइंडसेट लगे पड़ो द वेरिएबिलिटी अमंग लिविंग ऑर्गेनिज्म भीतर वेरिएबिलिटी अछि फ्रॉम ऑल सोर्स इंक्लूडिंग चाहे से टेरेस्ट्रियल हो चाहे से मैराइन हो फिर अदर इकोसिस्टम हो एंड द इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स ऑफ व्हिच दे आर पार्ट इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स भी ऑफ व्हिच दे आर पार्ट डाइवर्सिटी मींस चेंजेस नो यस व्हिच इंक्लूड्स डाइवर्सिटी विद इन द स्पेसीज भीतर ही डाइवर्सिटी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ले स्पेसीज ये आर जो बायोलॉजी आ जनकर अलग आबे करेक्ट नो so that will be different but within the diversity within the species between species within the species or between species of ecosystem bhitar hai yes geographical diversity le plateau tectonic plate oda different plates se concept asio zoological gacho no I'll go for C and C is wrong let's see geographical diversity zoological diversity or biological diversity I will also go for C. Don't worry. Yeah, I'm sorry, man. So this one I will take this question. I'm keeping every questions wherever we are getting it wrong. Okay, next. Which of the following branches deals with the interaction of the same species of living organism with their non-living environment? Yes. Which of the following branches deals with the interaction of same species living organism with their non-living environment? Biotic,
abiotic सहित interaction. Yes. Next question. Which of the following terms describes not only the physical space occupied by organ but also its functional role in the community of organism? Yes. And तमे देखो सेम क्वेश्चन यूपीएससी 2013 रो क्वेश्चन ओपीएससी 2024 रे पचार यूपीएससी 2013 रो क्वेश्चन which one of the following term describes not only the physical space occupied by the organism but also its functional role in the community of organism? UPSC 2013 this is OPSC 2023 actually जोटा कि 2024 रे एग्जाम आइतला ट्रू 10 years gap. Okay. Okay, this is a symbiotic relationship वाला चल दिया ना SSC रे भी पचला SSC रे भी पचला ecological nature. What is this? Which of the following term describe not only the physical space occupied by the but also its functional role in the community of organism? This is wrong. Sorry दियो एटा ecological nature. Then CAPF 2020 रो क्वेश्चन देखो transition zone of varied natural vegetation occupying the boundary between two adjacent and different plant community is known as what? Ecotone. That is the transition zone. We'll talk about what is ecotone. The ecological niche of an organism relates to it already. Niche will be related to the specific habitat. Competition which one of the following describes best description of the term ecosystem? Ecosystem कोटा को best describe करूँ. Yes. A community of organism interacting with one another. That is intraspecific interaction only. What about interspecific? Correct. This is half correct. Eta half correct. The part of the earth which is inhabited by living organism. The part of the earth which is inhabited. Interaction a community of organism together with the environment which they live. Yes, with the environment. Community with the environment. That is ecosystem. The flora and fauna of a geographical area. So what? They are not interacting. Flora and fauna both are living. Biotic. What about abiotic? Nahin. Yes. Best description. Hongi nahin. 2015 UPSC. While studying the vegetation of an area, terms like population and community are often used. Which one of the following statements best describe a population? Therefore, a group of organisms of one species living in the same area at the same time. A group of organisms of one species living in different areas during different seasons. Is that all? A unit consists of biotic and abiotic component. Population biotic and abiotic component. A group of organisms of more than one species living in the same area at the same time. Is that the population or that is community? A group of organisms of more than one species. More than one species. Yes. Of one species, I will go ahead. Yes, a group of organisms of one species. So, diagram lion species, that is lion population. Dog species, that is dog population. Human species, that is human population. Jodi mu group of many species that will be population ru heji basada kono community. Buji parcho direct question dekho jodi tame terminology jani thibo CDS2 2021 ro question. An ecosystem is consist of what? Producer, consumer, decomposer in a particular area. All the plants and animals of an area. A living community and its environment. Yes. Dekho community and environment, that is the keyword.
इकोसिस्टम कम्युनिटी एंड एनवायरनमेंट मन रहबो सी जे पत क्वेश्चन न करबो ना खाली पढिले किछि बुझा पड़िबो क्वेश्चन कले ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन देखिले ना भाई इकोलॉजिकल नीचे हैबिटेट रो कांसेप्ट रिलेटेड यस पढि देथिले तो बट कला गोटे टफ हला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट डेफिनेशन ऑफ हैबिटेट रो करेक्ट डेफिनेशन कोन natural environment of a living organism the place where one would go find and particular living natural environment of a living organism and the place where one would go to find particular living organism a complex of several type of communities it is a natural environment of a living organism where go and find the particular living organism is it the place where one would go to find see eguda mane टिके टिके देखा confusing वाला statement SSC रो तो हैबिटेट माने कोन जोठी तमे गोटे ऑर्गेनिज्म रुहे एया ना एंड दिस शुड बी ए नेचुरल एनवायरनमेंट हैबिटेट एमिति न कि माछो को तमे कहबो कि मु मैराइन न खोजी की करेक्ट नो जाई कि कोठी खोजीबी एक्वेरियम रे दैट इज रॉन्ग द प्लेस वेयर टू गो टू फाइंड द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म दिस इज हाफ करेक्ट बट नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेस वेयर वी गो वन वुड गो फाइंड द पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब बी आउ बी भितरे मु तो जदी मारिबी बी आउ डी भितरे मारिबी तो डी टा को टिके अधिक एक्सप्लेन करछि तो डी टा को मारिबा डेटा करेक्ट अछि नेचुरल एनवायरनमेंट सी दिस शुड बी नेचुरल एनवायरनमेंट नॉट लाइक ओके अननेचुरल की मैन मेड वाला कांसेप्ट ना 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 से कांसेप्ट नहीं तो भाई एथिरु सिखो तमे हैबिटेट इट इज द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द प्लेसेस वेयर वन वुड गो टू फाइंड दैट पर्टिकुलर लिविंग एनवायरनमेंट नेचुरल एनवायरनमेंट तमे खोजो नॉट के ऐसे मैराइन रे खोजो सॉरी मैराइन जगह रे तो छड़ी के ऐसे एक्वेरियम रे खोजो दैट इज रॉन्ग करेक्ट यस ए आउ सी तो भाई कटि जो आ बाकी रहला बी आउ डी भीतर जोटा बेटर लागु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस डील विथ द इंटरेक्शन ऑफ द सेम स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर नॉन लिविंग एटा तो करथिले okay energy flow an ecosystem consists of yes try this IES रे 2014 ecosystem consists of only trees only but देखो only all plants and animals all living and non living yes D super see these are mindset only देखिले तो भाई काट दो only animals in that area only पढ़ी नहीं बोली all plants and animals all living and non living that is good biotic and abiotic wala because ecosystem रे environment अछि environment ecosystem means what community which is biotic deals with environment is biotic as well as abiotic biotic होची living abiotic होची non living that means ecosystem better describe करबा जदी living और non living true ना होंगे नहीं a biome is what a biome no that is a biome a space biome is it as a delimited area delimitation commission no a complex of communities characterized by distinct climate and vegetation a group of plant growing in a particular area a collection of rare plants and animals what do you say biome yes what is the issue here मु तो तुमको कहली कि भाई देयर इज इंडिविजुअल देयर इज पॉपुलेशन पर देयर इज कम्युनिटी पर से इकोसिस्टम जदी ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम वाला सेटा होची बायोम होंगे नहीं ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम दैट इज कॉल्ड बायोम एंड मु कहली कि बायोम जनरली चेंज हुए जदी मु लैटिट्यूड चेंज करली ता माने गोटे पर्टिकुलर डिस्टेंट क्लाइमेट और वेजिटेशन रे जो इकोसिस्टम गुडा थिबो सेही कंटीन्यूअसली सेही इकोसिस्टम गुडा को मु कहबी बायोम a complex of communities definitely there will be bigger number of communities not only single because community will interact with one of the see jodi gote community interact kala environment se that is called ecosystem complex of community interact kale environment se that is group of ecosystem eya na a complex of community that means a group of ecosystem they are group of ecosystem summation of ecosystem is equal to biome and what is biome these are characteristic by distinctive climate and vegetation 0 डिग्री रे जो बायोम मिलिबो तुमको 30 डिग्री से बायोम मिलिबो कि नहीं होंगे नहीं यस एथिरे भूल होगा कथा नो एबुडा बहुत बढ़िया क्वेश्चन होगा एंड 50 एसएस रे चलिबो
एटा करथिले कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द इकोसिस्टम बायोडायवर्सिटी मीन्स पढ़ाई ने आगु आसीबो बायोडायवर्सिटी व्हाट डू यू थिंक किसी जिंस एमिति भी थिबो जोडा पढ़ा भी हेनी बट क्वेश्चन आसीबो ताको छाडी थोड़ी आसीबो बायोडायवर्सिटी डाइवर्स काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड वेजिटेशंस diverse kinds of animals diverse kinds of plants and animals in a particular area diverse kinds of exotic plants and animals what is this yes yes diverse kinds of plants and animals in a particular area ताहले तमे से एरिया रे बायोडायवर्सिटी जणा पड़ला कि तुंद्रा का तो बहुत सारा तो पूरा वर्ल्ड टा को थोड़ी मो बायोडायवर्सिटी कहबी ओके दिस इज डन नेक्स्ट सी बुझा पड़ुछ ना एक्चुअली प्रीलिम रो ना रिवीजन एमिति ही करिया कथा कि तमे टिके टॉपिक पढ़ो से टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन खोजो एंड से क्वेश्चन कर दियो एटलीस्ट टॉपिक ऊपर स्ट्रेंथ बनेबो तमरो कमांड बनेबो ओके एंड कॉन्फिडेंस भी बनेबो कि हां चलो ए रिलेटेड किछि भी क्वेश्चन आसे एई भलिया क्वेश्चन आसे आउ ता ढोला क्वेश्चन कोन आसे मु तो तुमको 20 25 टा क्वेश्चन देखो जदि 20 25 टा क्वेश्चन लगभग सिमिलर ये रे अछि फैशन रे देन क्वेश्चन सेही भलिया ही बनेबो ओके देन हैबिटेट निशेषण then habitat versus environment habitat और environment भितर difference कौन ना habitat always alive but an environment may not be why because environment may have what biotic and abiotic but habitat रे सब बेले गोटे biotic community थिबो बुझि होछि ना नै habitat रे सब बेले गोटे biotic living entity थिबो गोटे community रहउथिबो गोटे individual रहउथिबो that it is always alive while environment it may not be alive all the habitats are environment but not all the environments qualify as a habitat because environment can be biotic as well as abiotic yeah na but habitat is biotic so all the environments may not qualify as a habitat because the environment can be abiotic so a habitat that caters to the specific species environment can support multiple species potentially leading to various habitats so multiple habitats environment rahi paribo but habitat generally related to one a particular specific species is that clear okay then ecosystem versus environment versus ecology what is the difference ecosystem tame jancho what is ecosystem community interact with environment that is ecosystem what is environment माने गोटे organism अछि ता चारि पटे जहा जहा भी अछि जहा ता सहित ताको इन्फ्लुएंस करछि that is environment एया ना and what is ecology interaction टा स्टडी करिया होछि ecology yes so an ecosystem has life in it and it is a functional unit of the nature or environment ecosystem होछि life in it माने ecosystem होछि गोटे biotic component react करियो biotic or abiotic सहित biotic definitely थिबो yes that is ecosystem habitat is a part of the ecosystem yes a biotic लोकोटा community टा को गोटे जगह रे तो रहिबो that is a living area and it is always living that is what we call habitat and environment may or may not be have life is a group of ecosystem all ecosystems are environment but not vice versa all ecosystems are environment रे biotic और abiotic भी अछि but ecosystem रे definitely biotic रही habitat रे definitely biotic रहिबो बुझि होछि ना नै ecology what is ecology na it is the study of interaction between organism and the surroundings of an ecosystem इकोलॉजी होची जस्ट इंटरेक्शन को स्टडी करियार अछि कि गोटे ऑर्गेनिज्म रो एनवायरनमेंट सहित सराउंडिंग सहित जहां भी तार इंटरेक्शन होती दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इकोलॉजी ओके सो इफ यू सी हैबिटेट एंड निशे माइक्रो हैबिटेट वाला कांसेप्ट भी तुमको कहथि करेक्ट नो फॉर एग्जांपल दिस इज ए ट्री ए गछरु फळ पडिला ए फळ जदी पडिला एठी आंट अछि एठी कोन अछि आंट अछि ए फळ रे आंट चढि दियो एया ना भाबिने गोटे आंब गछरु आंबटे पइला आंबटा मिठा अछि बोली पिंपुडी लागि जिवे किछि बाड अछंदी किछि पक्षी आसीबे से माने केवल पिंपुडी को ही खाइबे ताहले तुमको लागुनी यार हैबिटेट सब बेले तळे ही रहइबो एरिया रे जदी पिंपुडी चढु ही नांदी ए केबे एरिया को जीवो भी नहीं ट्रू देन ए ट्री रे एठी गोटे रीजन अछि
एठी गोटे रीजन दिस इज नेचुरल हैबिटेट ओके हैबिटेट मींस नेचुरली से माने सेठी ही मिलिबे दिस इज वन एरिया जोठी की बहुत सारा इंसेक्ट्स असंदी गछरे एंड देयर आर सम बर्ड टू व्हिच आर वुड पिकिंग बर्ड से माने आसीबे एंड से माने एई जगह ही खोजिबे बुझिला नहीं then there are few bird they will feeding from the fruits so bird 1 2 3 the habitat will be tree but the niche will be different for bird 1 the function will happen at the bottom for bird 2 the function will happen at trunk and bird 3 the function will happen at the branches बुझिला that means the niche will be applicable particular to the particular zone of the habitat basically habitat can be the whole tree but the niche is very particular specific to the habitat correct no जो habitat जो जगह रे से माने रहउछनी से जगह रे ताकर रोल कोन एंड से क्वेश्चन टा को सॉल्व करिया हेला एटा इजी हिजो करेक्ट नो बर्तन तमे जदी बुझी गलो से जो ए डायग्राम टा से क्वेश्चन टा कोठिला भाई क्लियर कार डाउट अछि क्वेश्चन बुझा पड़ला so the answer will be specific habitat of that organism ecological niche will be related to specific habitat सी को जगह रहउची गोटे पक्षी से तळु उठौची गोटे पक्षी मझिरु ट्रंक रु आ गोटे पक्षी गछ डाळ तो तांका से मन निज निज फंक्शन करछथि सो habitat and niche is clear yes then there are different types of niche kono now there is something called habitat niche there is something called trophic niche and multidimensional niche okay habitat niche now this is the physical area of a habitat that a specified species occupies habitat niche ki this is a physical area in a habitat gote bodo habitat रे गोटे habitat niche होची गोटे physical area जोथरे गोटे species occupy करछ simple जिंस trophic niche कोन ना trophic level of occupied by the species in the food chain गोटे food chain एठी अछि whether the ये होची different trophic this is first trophic second trophic third trophic तो ए ट्रॉपिक रे जदी जने रहउची दैट इज ट्रॉपिकल निशे ए ट्रॉपिक रे तार जहा काम दैट इज ट्रॉपिक निशे निशे मींस फंक्शन जदी से हैबिटेट रे रहि के फंक्शन करूची कोनोसी गोटे जगह रे पर्टिकुलर नेचुरल ऑकरिंग एरिया जोठी से प्राणीटा मिलिबो दैट इज हैबिटेट निशे जदी से ट्रॉपिक फूड चेन रे मु कथा कहबी फूड चेन रे तार काम दैट इज ट्रॉपिक निशे देन देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल निशे फंडामेंटल निशे और लिविंग फैक्टर अबाउट ए कंपोनेंट सिंगल फैक्टर डिटरमाइनिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज सो व्हाट इज इट ना दिस इज अ फंडामेंटल निशे आकु बंचिया पई जो निहाती जो काम गुडा करिया पड़ो करेक्ट नो यस सेगुडा को तमे कोन कहबा ना इट इज द फंडामेंटल निशे आर एटा हो जे मिनिमम एति की काम तो ताकू करबा को पड़िबो यस एगुडा दरकार नै जस्ट जानिता फंडामेंटल निशे एगुडा भी सेते इंपोर्टेंट नो सो फंडामेंटल निशे ऑर्गेनिज्म could exist without ecological interaction if the organism can exist without ecological interaction for example भाबिनियो पांडा करेक्ट नो 6 मास सोई पड़ियो जतले 6 मास से सोई पडुची सेतले से का सहित इंटरेक्शन करूची का सहित भी नहीं होंगे नहीं ट्रू केवल एबायोटिक सहित केवल सिंगल फैक्टर एबायोटिक सहित केवल निश्वास टिके नउची प्रश्वास टिके नउची डन खाइबा पीबार कांसेप्ट ही नहीं सो विदाउट इकोलॉजिकल इंटरेक्शन अत्यधिक माने बायोटिक सहित से करू ही नहीं स्टिल से बंचुची दैट इज द फंडामेंटल निशे रियलाइज निशे कोन ना पॉपुलेशन एग्जिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ इंटरेक्शन एंड कंपटीशन इंटरेक्शन होची कंपटीशन होची सेति बेले से काम करछंती दैट इज रियलाइज्ड निशे ये सब हमर दरकार नहीं हमर जस्ट सिंपल कांसेप्ट यू शुड नो व्हाट इज निशे मींस फंक्शनल वर्क दैट्स इट निशे रो टाइप इट कैन बी फंक्शनल habitat niche where it lives food niche what it eats decompose and what species it competes with that is food niche reproductive niche how and where it reproduces physical and chemical niche temperature topography humidity and other requirement physical and chemical niche तो जदि तमे देखिबो this is a tree correct no एठी गोटे येलो बार्ड अछि गोटे रेड बार्ड अछि आ गोटे अछि ब्लू बार्ड ओके तो ए जो ब्लू बार्ड ना ये केवल एति की पार्ट रे ही बसिबो
बिकॉज आर जहाँ फंक्शनल रोल एई जगह रे ही ताको मिल जाउछ जदि रेड बार्ड देखुची मु रेड बार्ड एई जोन टारे ही बसुची से ऊपर को जाऊ ही नहीं येलो बार्ड ये एई जगह रे ही बसुची will they have competition will they have competition no correct no because their niches are different होंगे नहीं तांकर निशे जदि सेम निशे होता एंड सेम हैबिटेट ताहले कंपटीशन बट इफ द निशेस आर डिफरेंट his niche is at this location his niche at this location this niche is at this location there should not be any competition there is adoption there is cooperation true true कार डाउट अछि रे ओके नेक्स्ट व्हाट इज निशे ओवरलैप कंपटीशन हो सेतरे निशे जदी ओवरलैप हैला कंपटीशन हो co-occurring species share parts of their niche space with each other overlapping niche may lead to competition or exclusion see once तमे clarity नहीं होलो कि भाई निशे ओवरलैप हैला मींस फंक्शनल रोल ओवरलैप हैला मु जो काम करबी से काम आउ जणे भी करिवो फॉर एग्जांपल मु इंस्टीट्यूट रे इकोनॉमिक्स पढौची आउ गोटे टीचर भी आसी इकोनॉमिक्स पढेबो देन निशे ओवरलैप होबो देन ता मो भीतर न पड़ी पारे ई है ना होंगे नहीं यस ओवरलैप होबो सी भाई के अच्छा मु बहुत जानि मु भावती नहीं मु बहुत जानि देन पड़िबोनी किंतु हां तमे मॉर्निंग बैच रे पढाओ मु इवनिंग बैच रे पढेबी ओवरलैप होई नहीं तमे तम लेवल रे पढाओ मु मो लेवल रे पढेबी overlap होबे for example on academy there are multiple teachers but they will have different batches कि english hindi और english कि खाली हिंदी कारण there is no overlap true but niche जदि overlap होबो competition होबो so what is this competitive exclusion the two species competing for the same limited resource cannot coexist if they consist of population value so जदि गोटे जगह रे सेम रिसोर्स रे दीटा सेम निशे वाला कंडीशन रे दीटा स्पीसीज आसिले कि मोर काम जहा तार भी काम सेया देन सेठी कंपटीशन होबो बुझियला ना नहीं बुझियला ओके तो तेनु जदी कंपटीशन करिवार नहीं एंड समस्त को बंचिवार अछि ताहले देखो सो दिस इज ए ट्री वाला कंडीशन कि ए ट्री रे दिस इज ब्लैक ह्यूरिकेन कबलर जे कि पूरा गछर केवल साइड रु से तार खाइबो then there is black throat green rubble से केवल ए मझी पोर्शन टा ही खाइबो ना से आउ कोठ की जीवनी then cape may rubbler that is on the top similarly there is a bay breasted rubbler से केवल ए जोन को आउ के तळ जोन को कांसेप्ट हो कि भाई there are different people different basically species they are doing their niche in different zone of the habitat yes that's why they will coexist parallelly in the same habitat so niche overlap is reduced by resource partitioning this is what we called resource partitioning कि सेमानकर निशे होची सेम ए समस्त ही खाइबा पई आछन किंतु जदि तमे रिसोर्स को पार्टीशन कर देला गोटे रिसोर्स जेउटा है गछ ए गछर साइड टा को गोटे पार्ट कर देली मझीटा को गोटे पार्ट कर देली ऊपरटा को गोटे पार्ट एमिति गोटे पार्ट मो कहि भाई तू केवल एई पार्ट रे खाइबो तू एई पार्ट रे ताहले जदि रिसोर्स पार्टिसिपेशन नहीं गला ताहले this niche overlap this can be reduced is that clear resource partitioning वाला concept clear okay so similarly resource partitioning रे तमे आउ कोन देखिबो ना the resource partitioning process of moving things around in order to satisfy the niche size to an appropriate level for example जदि तमे देखिबो this is marine and this is terrestrial this side is marine देखो यार गोड़ भाई मोर सी कहूची भाई मोर छोटिया मते ए जगह छाड़ी दियो ठीक अछि ए जगह मते छाड़ी दियो दिस इज ए प्लोवर ताको ए जगह रो से तार गेंडा या फिर कंकड़ा छोट कंकड़ा एगुडा से खोजी गाजी खाइबो छाड़ी दियो ये कहूची हां भाई मु तोठू टिके बड़ मु टिके भीतर को जेबी देन से कहूची मु तोठू टिके बड़ बत कहूची मु टिके भीतर को जाय परे मु मते तो स्विमिंग आसे एंड दिस इज फ्लेमिंगोस ये कहूची भाई मोर तो गोड़ भी बहुत बड़ मु आउ टिके भीतर को जाय परे मु काहे ठिया हेबी बुझियो ना नहीं that means can I say this is resource partitioning resource ए जगह होची पूरा रिसोर्स ए रिसोर्स टाको पार्टीशन करली एंड समस्त पर काम होची फंक्शनल निशे इज सेम निशे इज फंक्शनल रोल इज सेम ये भी खोजी के खाइबो ये भी खोजी के खाइबो ये भी खोजी के खाइबो ये भी खाइबो ये भी खाइबो समस्त कहउछन भाई हमें खाइ नबो ये जहा को खाउथबो ये भी ताको खाउथबो किंतु ये कहउछ भाई मु मोर अलग जोन नु खाइबो ये कहउछ मु मोर अलग जोन नु खाइबो सी तमे देखियो ना बाय डिफॉल्ट कुकुर बिलेई कुकुर मानकर जोन थाए करेक्ट नो होंगे नहीं ये जोन रे भाई आमे केवल बंचियो एठी आमे शेयरिंग कर दो तो जगह एटा सी देखियो सी ता आडू कासियो माने
स्टार्ट हे जो रागारागी ट्रू देखि दियो ना बाय डिफॉल्ट बिकॉज से माने कोएक्जिस्ट एथि पे करूछंदी बिकॉज से माने रिसोर्स टा को पार्टीशन करके रखिछंदी आ जदी रिसोर्स टा शेयर हबो गोटे प्लेट रो जदी 3-4 टा कुकुड़ आसीबे ए प्लेट रो खाइबा प्लेट रहबनी से तळे पड़ी जिवा ने कुकुड़ गुडा बाडा बाडी होथि एया ना बिकॉज से मानकर निश्चय इज सेम and they are trying to share the same resource. They are trying to share the same resource. That's why there will be competition. There will be replacement. किए काको मारी दी भी दे पारे कोटा कोटी करी मारी दे पारन बुझी परछना नहीं yes yes okay the next concept is related to what ecotone. This is a zone of junction, zone of tension also ecotone between two or more diverse ecosystem. This is one ecosystem where is there are living being who are staying in a terrestrial continental crust and they are interacting with air biotic and abiotic factor environment सहित से माने interact करछनी. This is their ecosystem, that is terrestrial ecosystem. This is marine ecosystem. पानी रे भी किछि जीव अछंती कम्युनिटीज अछंती से माने यार एनवायरनमेंट सहित इंटरैक्ट करछनी जेतले ए दिटा को कंबाइन हेकि जिवे ना माराइन आ टेरेस्ट्रियल जेतले कंबाइन हेकि जिवे जोटा ताकर कॉन्फ्लुएंस जोन बनिबो जोटी से माने कंबाइन होथिबे दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ जंक्शन between the two or more diverse ecosystem. There will be richness in biodiversity due to AIDS effect. एठी देखा जिवो तमर AIDS, these are the AIDS. ए AIDS रे biodiversity अधिक देखा जिवो से ध्यान में देखियो ना कोणार्क रो एपटे जंगल एंड एपटे होची समुद्र माराइन इया ना कोणार्क जे तमे देखियो कोणार्क हो पुरी हो समुद्र ए जो कोस्टल जोन मैनग्रोव वाला जोन सेठी अधिक बायोडायवर्सिटी देखा जिवो काहे कि ना एपटे पानी भी अछि एपटे भी बहुत स्पीसीज एपटे भी बहुत स्पीसीज ए स्पीसीज आस्ते पानी वाला जीव को खाया पई ट्रू ए स्पीसीज को टिके दरकार माटी टिके चाल जुल के आसी जिवो ट्रू हगे नै भाई कुमिर भी आसीबे तो ताल तुमको देखा जिवो कोन एठी देखा जिवो कोन अधिक अधिक दिस इज कॉल्ड एड्स इफेक्ट richness in biodiversity due to एड्स इफेक्ट. सो एग्जांपल ऑफ इकोटोन्स मार्शलैंड ड्राई एंड वेट ड्राई किछि वेट किछि मार्शलैंड दैट मींस ड्राई मींस गोटे प्रकार इकोसिस्टम वेट मींस आ गोटे प्रकार इकोसिस्टम. मैनग्रोव फॉरेस्ट मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल जोठी मिसु जने मैनग्रोव फॉरेस्ट ग्रासलैंड डेजर्ट आउ फॉरेस्ट एपटे डेजर्ट मझिरे जो जोनटा आसला डेजर्ट रु किछि प्राणी आसबे ठीक भाई पानी फानी मिलुची पीवा पई एपटु किछि लोक आसबे अच्छा ग्रासलैंड एते बड़ बड़ गछ रे हमें बंची पर नथलु ग्रासलैंड टिके आराम से बुला बुली कर परियो आसबो ठीक. इस्चुरीज सॉल्ट वाटर एंड फ्रेश वाटर जोठी जोडी होचनी इस्चुरीज दैट इज इकोटोन करेक्ट नो the characteristics of ecotone. It is a zone of tension. It is a zone of tension. काहे कि ना एटी कंपटीशन भी हो sufficient amount of competition हो ये ताको खाइबो सिया को खाइबो. It is what is this it is give me a second. Linear. It is linear progressive increase in species compositions of one what is this incoming community and a simultaneous decrease in species of the other outgoing adjoining community. ता माने कोन कि काहे कि ये जोन ऑफ टेंशन ना एठी जदी टेरेस्ट्रियल एठी जदी मैराइन असदी एमान आसिले ए कोटन रे तो एठी मे भी बारे जदी बग बहुत पळे आसिले ना बग तो एमाने कोन करिवे एमाने तीन छडा खाइ देबे माछ उडा को खाइ देबे बुझि होते ना नहीं ताहाले गोटे स्पीसीज सफिशिएंट मात्रा रे देखा जिवे जोडा के होजी बग एंड गोटे स्पीसीज खाइ जिवेनी माछो देखा जिवेनी. इट इज लिनियर प्रोग्रेसिव increase in one species simultaneously decrease in other species. It is a well developed ecotone contains some organizations which are entirely different from that of the adjoining component. Same concept. Well developed ecotone contains some organizations which are entirely different from that of the adjoining communities. Means different communities से जगह को आसुथिबा दरकार कोन transitional zone between two distinct communities. Yes, two distinct communities जदि better देखा गले distinct देखा गले that is good for ecotone. Correct, that is good for ecotone. The biological community in its environment such as pond, an ocean, a forest, even an aquarium is known as what? Biological community in its environment. Yes, चाहे से किसी भी हो ecosystem can be natural ecosystem or man-made ecosystem होंगे नहीं. aquarium से कौन सी that is man-made ecosystem. Yes, this is a good question. Which is most stable ecosystem? What do you think? Co ecosystem what most stable ecosystem is? Ocean ecosystem, desert ecosystem, forest ecosystem.
यस सी टेरेस्ट्रियल रे भाई जो बाघ भालू या फिर से जो हरिण ये सब टिके भाई एपट सेपट करेक्ट नो ओसेन रे ये सब यात्रा पता ठीक अछि बड़ा माछ थांती बट स्टिल सेथिरे जो जू प्लांटन वाला थांती ना से स्टिल स्टेबल इकोसिस्टम सेथिरे बेसी यात्रा हुएनी एंड क्लाइमेट बेसी हार्श भी न थाए इट क्लाइमेट टिके पड़े पड़ला भाई जळी की मरी गले केजन करेक्ट नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम काली जति क्वेश्चन आसी हे जिवो राइट यस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम मैन मेड इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड an artificial ecosystem is represented by